Assalamu alaikum viewers, my name is Saifullah. I welcome you all to the platform of जावेद पब्लिशर। अपनी आज की इस वीडियो में हम क्लास 4 कंप्यूटर स्टडीज़ के चैप्टर नंबर 1 वर्किंग विद फाइल्स और फोल्डर्स की एक्सरसाइज को सॉल्व करने जा रहे हैं। तो चलिए चलते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1, चूज द करेक्ट ऑप्शन। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइल्स इन अ कंप्यूटर, फॉर एग्जाम्पल डॉक्यूमेंट, इमेज फाइल, म्यूजिक फाइल और ऑल ऑफ दीज। हमारे कंप्यूटर में ये सभी फाइल्स होती हैं, ऑल ऑफ दीज, ऑप्शन डी। एवरी फाइल नेम हैज़ टू पार्ट्स, डैश एंड डैश, प्राइमरी, सेकेंडरी, मेन, सप्लीमेंट्री, फर्स्ट, सेकेंड या ऑल ऑफ दीज। ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। Dash window is used to access and manage the files and folders stored in external memory devices. Option A, external. Option B, using toolbar. Option C, this PC या none of these. Option C is the right option, this PC. Dash pane of the this PC window shows the content of the folder, left, right, drives or address bar. The right option is right. Option B. Question number 2. Fill in the blanks with the help of given words, and the given words are control plus X, recycle bin, control plus shift plus N, delete and secondary. Blank 1. The extension of a file name is called secondary name. Shortcut key to create a new folder is control plus shift plus N. Blank 3. Control plus X shortcut key can be used to cut a file or folder. Blank 4. When we delete a file, the dash file dialog box appears to confirm the delete file. Our next question is question number 3. Answer the following questions. Question 1. What is a file? A file is a digital container that stores data such as text, audio, image or program. Question 2. What is a folder? A folder is used to store files and other folders. Question 3. Write the shortcut key for opening the this PC window. The shortcut key for opening the this PC window is Windows plus E. Question 4. What is the use of F2 function key? F2 function key is used to rename a selected file or folder. Question 4. Tick the correct statement and cross the wrong one. A collection of related files cannot be stored in a common folder. Cross. A folder within a folder is called a subfolder. Tick. We cannot use the delete key to delete a subfolder. Cross. We can move a folder from one location to another. Tick. Using control key, we can select non-adjacent files. Tick. In our next question, we have to match the column A with the column B. Pen drive. A pen drive is external memory device. Copy. For copy, the shortcut keys is control plus C. .docx. It is a secondary name. To delete a file permanently, we use shift plus delete key. Paste. To paste, we use shortcut key control plus V. इसके अलावा टीचर्स अपने स्टूडेंट्स को लैब में ले जाकर मुख्तलिफ तरह के फाइल्स और फोल्डर्स को क्रिएट करना, उनको रीनेम करना और डिलीट करना ज़रूर सिखाएं। तो ये थी हमारे फर्स्ट चैप्टर की एक्सरसाइज। उम्मीद करता हूँ इसके साथ ही आपको एक्सरसाइज को सॉल्व करना आ गया होगा। मिलते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।